इंटरनेशनल ये हमारा एक हम इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं 13 जनवरी से शुरू होगा ताकि लोगों तक हम भारतवर्ष में हर कोने कोने में ये मैसेज पहुंचा सकें कि ई वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो सही ढंग से रिस्पॉन्सिबल ढंग से होना चाहिए। ये नहीं होने से पर्यावरण में बहुत बड़ी हानि होती है। उसके साथ साथ ही हम जो बच्चे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उसमें एक्सपोज होते हैं उसे डील करने में उनकी पर्सनल हेल्थ हैजर्ड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये अवेयरनेस कैंपेन सारे भारतवर्ष में होगा। उसके साथ साथ ही ई वेस्ट का कलेक्शन भी होगा और हमारा गोल ये है कि आस्ते आस्ते हमारे देश में हमारे सारे दोस्तों को और हमारे सारे नागरिकों को ये एक हैबिट पड़ जाए ताकि हम रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करें ई वेस्ट। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल ने दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट ड्राइव लॉन्च किया। भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन को लेकर पूरा विश्व भारत की देखरेख कर रहा है। इसी मुद्दे पर अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को ध्यान रखते हुए लायंस क्लब इंटरनेशनल ने आज हिंदुस्तान ई वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ डंप एंड डोनेट नामक दुनिया की सबसे बड़े ई कचरा संग्रह अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के लिए लॉयंस क्लब ने HEW प्राइमर्स पार्टनर्स और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के साथ साझेदारी की। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में इस अभियान की शुरुआत की घोषणा करते हुए लायंस क्लब इंटरनेशनल के थर्ड वाइस प्रेसिडेंट AP सिंह ने बताया कि 13 जनवरी 2023 से यह अभियान देश के 120 से अधिक शहरों में शुरू किया जाएगा। राकेश कुमार सिंह CRPF कमांडेंट ने कहा कि हम में से अधिकांश लोग ई कचरे को खत्म करना नहीं जानते और इसलिए यह अभियान न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। That's 290,000 members in around 8,000 clubs in all states and union territories of the country. Our motto is We Serve, and we are driven by the passion. श्री सिंह ने बताया कि महीने भर चलने वाले इस अभियान के तहत लायंस क्लब इंटरनेशनल के सदस्य विभिन्न स्कूलों, स्थानों और अन्य माध्यमों से पहुंचेंगे और ई कचरे और स्वास्थ्य, पर्यावरण और इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करेंगे। Here also the Lions Clubs International Foundation will be stepping forward with its first contribution of $10,000 in the next day. Maybe by tonight or tomorrow morning, we'll have the grant approved and the Lions will start working towards that. The local Lions are already working, but the foundation will also. Across the entire world, and in India also, whenever there have been big natural disasters, Lions Clubs International Foundation has invested. I would say invested, it's not giving donations. Those are investments in every country, in every community. They have invested crores and crores of rupees. We've just concluded today a conclave in New Delhi, where we had a conclave of the Lions blood banks. We operate about 50 blood banks in the country, 45 dialysis centers, and more than 140 schools. So we were running a conclave with the organizers of those Lions blood banks, dialysis centers in the schools. And there we had yesterday our Union State Minister for Education, Sri Suhas Sarkar, also with us. So the Lions are working, and while working towards the control or doing our best to preserve the environment is part of our global cause. It's a cause which is so important for the existence of the human race on this planet Earth. And Lions are committed towards it. If we look at our country, India, and look at our own culture, this is a country where rivers, जहाँ नदियों की पूजा की गई, जहाँ आज भी गंगा को गंगा माँ माना जाता है, where जहाँ पौधों को, जहाँ पेड़ पौधों की भी पूजा की गई है, ये वो देश है जहाँ हनुमान को पवनपूत कहा गया है और आज भी पवनपूत के नाम से उनकी पूजा होती है। वायु, पेड़ पौधे, नदियां, इनको देवी देवताओं का स्थान इसलिए दिया गया है so that we learn to rever them, we respect them because they represent the ecosystem which must be preserved for the human race to continue to exist, to continue to inhabit the planet Earth. But somewhere down the line,
all of us, and I don't say any other nation more or less, but human beings have forgotten that responsibility to maintain that balance of nature, and we are being able to, we are paying back in a very, very tough manner. But then there is a responsibility to the next generation that we owe, and the responsibility is to make that correction, number one. Number two, to make sure that we do not harm the environment any further, because today the alarm bells are very strong. We are aware about the climate issue. A rise in temperature by 1 degree across the world, what is the level of disaster that it can make in the entire world? We are aware of all those issues, and we cannot be discussing. And today, where technology has become such an important part of our lifestyle, and we are more than 1.3 billion Indians in our own country, such large population, and हमारे देश में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी गजब का हुआ है। जहाँ संसार में नहीं हुआ, वो सपना था कि हमारे छोटे से छोटे कस्बे में एक दूध वाले और रिक्शे वाले के पास भी एक मोबाइल फोन हो। ये 20 साल पहले सपना था, यह सच्चाई हो चुकी है। 10 साल पहले या 5 साल पहले भी लोग सोचते थे क्या हिंदुस्तान का टैक्सी ड्राइवर स्मार्टफोन यूज कर सकेगा, लेकिन आज हिंदुस्तान के छोटे से छोटे या मिडिल शेयर गांव में भी आज उबर, ओला, अदर सर्विसेज इसी स्मार्टफोन से ही चल रहे हैं। Now these are simple examples, but otherwise technology is a part and parcel of our life. Now when we use technology, we must also be able to deal with the disposal of those devices. If we don't deal with the disposal of those devices in a responsible manner, we are again resorting to using or rather abusing nature. We are going to be filling up using landfills. We are going to be, if this is not responsibly disposed of, our children who work with such devices and breaking those devices through the unorganized sector are Club for associating me on this novel drive. I think most of us are not aware of the damage which the e-wastage is going to do. I reached here before time and I was going through the initiative which Lions Club has launched, and it is mind-boggling the amount of toxicity it is generating. Probably we are not able to visualize. And why we are not able to visualize? Maybe because the attention of media is somewhere else. Our priorities are something different. And probably this is not the age when we are talking about lack of things available to us, to the world. In fact, we are living in the world of abundance. And this abundance is creating a lot of problems. This abundance is creating lots of wastage also, which we are not able to tackle. As Sangeeta Madam was saying that where there is need, there is line. I thought this kind of tagline is just. But when we look at this whole concept of e-waste, I mean, back in the day we used to use this term that the world is a network society. And what it means is that by 2030, 50 billion devices will be talking to each other. A TV could be talking to a phone, a refrigerator could be talking to a TV and whatnot, right? And as good as it sounds, it also poses a challenge of what happens when these products reach the end of the life. And as you know that almost 70% of the e-waste that gets put back into the system is very, very toxic, creating climate hazard, creating health issues, seeping into the water, spoiling the air and whatnot. And the implications of this are paramount. And when we talk about network society, India is no far, right? I mean, it's already a third largest producer of e-waste. And today, India is not only the biggest consumer of these electronics, but as you also see, that India is also becoming one of the big producers of these electronic items, right? With the mobile phones, TVs, a lot of manufacturing shifting its ways to India, contributing to the GDP, which would mean that the multiplier effect of both consumerism and production, as far as e-waste is concerned, India will play a big role. And multiplied by 1.3 billion, and that's how complex the problem in India is. And e-waste is a bigger issue because it's just not the policy issue, but also the infrastructure for supply chain of handling of this e-waste, the financing that's available, the capacity that exists in the ecosystem. The presidency of G20, now at this moment, it is also very important drive that is being taken by the Lions Club, and others also should come forward for this e-waste campaign drive. मैं अभी तक
निगम पार्षद 127 वार्ड डेवलपमेंट दिल्ली। आज ई वेस्ट की बहुत बड़े खतरे के रूप में in Karnataka and the state of Goa. So in Karnataka, we're going to have a mega launch in Bangalore and Mangalore, two cities, and one in Goa. We identified about 20 different locations in the state of Karnataka where it will be launched and continued for a month. Pongal festival is what we call it as bogi. Bogi means get rid of unused things. We used to burn the clothes, things like that. Now we are linking this with the festival. So on January 13th, we are launching the scheme in the entire Tamil Nadu. Your e-waste campaign. Donate your e-waste, whatever is lying in your homes. We have got 13 lines districts spread over all over Tamil Nadu, and we have got around 70,000 lions and their families. We are tying up with the schools. We are tying up with self-financing arts and science colleges, and several municipal corporations. Local bodies have also come up with us in this great movement. So we are going to have this from January 13th to February 13th. State of Andhra Pradesh commences this program on the 20th of January to 20th of February. As you are aware, Andhra Pradesh celebrates the Pongal and you would hardly get anyone to work around. So this program will be initiated on 20th on about 7 cities, starting from the city of Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Guntur and Nellore. We have about 12,000 to 14,000 lions and about 400 odd lions clubs have geared up for this. बॉटल्ड वाटर बिका है। लास्ट 3 या 4 साल से वापस ड्राइव आई है कि प्लास्टिक छोड़ दो, गो बैक टू द ग्लास बॉटल्स। एंड वापस उसी स्पीड से, जिस स्पीड से हम प्लास्टिक पर आए थे, आज उसी स्पीड से हम प्लास्टिक को छोड़ के वापस ग्लास बॉटल्स पे जा रहे हैं। सो द पॉइंट इज, आज ये बॉटल यहाँ रखी है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो लायंस के किसी भी प्रोग्राम में इस बॉटल को हम अलाउ नहीं करते, हम इसको बैन करते हैं। नॉट डन, बिकॉज ये वन टाइम यूजेज प्लास्टिक बॉटल्स हम इसको अलाउ ही नहीं करते हैं। बट दैट्स ओके कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऐसा है, कोई हर एक इतना माइन्यूटली चेक नहीं हो सकता, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इंडियन माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये मैडम ने जो पूछा कि वो उसको कबाड़ी वाला कुछ पैसे देगा, तो वो क्यों आपको देगा? बिकॉज वी बिलीव अगर हम उनको समझा पाएंगे तो वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे। वो 20, 50, 100 रुपए के लिए जब वो देखेंगे कि देश का भविष्य इसके ऊपर में इस पर निर्भर है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का पूरा फ्यूचर इन चीजों पे निर्भर है। और आज एनवायरमेंटल अब्यूज के लिए बहुत बड़ी जागरूकता देश में है। जैसे सर ने बात करी, जो बिहेवियर चेंज की जब हम बात करते हैं, इस कैंपेन को आप एक ट्रिगर की तरह देखें, जिससे लोगों में वो जागरूकता जगे कि जो ई वेस्ट है, जैसे घर में एक बैटरी हुई या केबल वायर हुआ जो हम फेंक देते हैं, उससे हमारे पर्यावरण को क्या नुकसान होता है। जब ये अवेयरनेस क्रिएट होती है बच्चों के माध्यम से या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आज हमने बात करी, आज इंडिया करीबन 5 गुना, सिर्फ 10 साल के अंदर 5 गुना ई वेस्ट जनरेट करेगा। तो ये जो मेक इन इंडिया कैंपेन है, PLI स्कीम है, ये कहीं हमारे पर्यावरण को दूषित ना करे, इसके लिए 3R का कैंपेन और ये जो अब ई वेस्ट को हम अभी जो ई वेस्ट का रूल नोटिफाई हुआ है 2022 में, इसके जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हमारे अंदर वो जागरूकता भी आए, जिससे हम जो ई वेस्ट जनरेट करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ कर सकें। कैपेसिटी क्या रहती है? ये तो एक जिम्मेदार इंसान की समझदारी की बात है कि हमें अगर कोई पर्सनल ह्यूमन डिस्पोजल भी करना है तो डिस्पोजल सही जगह पे सही ढंग से होना चाहिए। जो सही ढंग है, उपाय है, उसी ढंग से होना चाहिए। लेकिन इस देश में ह्यूमन डिस्पोजल भी सही ढंग से हो, उससे उस समय जब हम कह रहे हैं कि भारतवर्ष सबसे संसार की तगड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री को सारे देश में एक अभियान चलाना पड़ा कि टॉयलेट्स हर जगह से कंस्ट्रक्ट किए जाएं। ये हुआ है हमारे, और हमने किया है। तो हमको एज फार एज वी आर कंसर्न, मैं ना तो कोई गवर्नमेंट के बारे में कोई मैं कह सकता हूँ, ना मेरा कोई अधिकार है, ना मेरे पास गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, ना मुझे कहना चाहिए। हम तो कॉमन इंसान हैं। हमको ये समझ आया है ऑर्गेनाइजेशन को कि आज इसकी जरूरत है। अभियान ओपन टॉयलेट की बात की, कल ही एक समाचार पत्र है द वायर, उसमें छपा है कि हाउ स्वच्छ भारत इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन छत्तीसगढ़ विलेज। वो बताते हैं कि भाई उनकी इच्छा है, वो खेतों में जाना चाहते हैं, पता नहीं सरकार क्यों फोर्स है। तो कहने का मतलब आप कितनी भी अच्छी नीति बना लें, और सरकार का काम नीति बनाना है, नीति का जो एग्जीक्यूशन है किसी भी पॉलिसी का, और हर चीज के लिए सरकार नीति बनाए, ये अच्छी बात भी नहीं है।
लायंस क्लबें वही कार्य करती हैं जहाँ जहाँ जिस तरह के समाज में जिस समय की ज़रूरत पड़ती है, और एनवायरनमेंट हमेशा से हमारा एक ग्लोबल कंसर्न है, एक ग्लोबल कॉज। तमाम सरकार ने तो ये इस तरफ से ओपन ऐलान कर रखा है कि इसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोजल होना चाहिए, और हम जो काम करेंगे वो नेचुरली सरकार के साथ उनको सपोर्ट करने का ही कार्य है। सर आज के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज ई वेस्ट को